I'm also looking for a career as motivational speaker, and for last couple of years I'm into this as well as career counseling. Here we go. Watch this video later. What we want in our life? हमें जिंदगी से चाहिए क्या? और हम सबको चाहिए, क्योंकि लाइफ इतनी छोटी है और इतना कुछ हमें उस छोटे टाइम पे अचीव करना है कि इतना कुछ कर जाए कि एक नाम तो हम अपना बना ही जाए. We all are looking for this respect in society, aren't we? ये तो हमें चाहिए. And this all will come only when you get the right career, not job. There's a big difference between job and career. Money, fame. Raise your hand. How many of you want to be famous? Should be 100% at least today. We all are looking for emerging as a brand, isn't it? We all are brand. Satisfaction, whatever we do. And by getting the job, you're not going to get satisfied. By choosing a career and getting the job according to your chosen career, you get satisfaction also. Security. When you have fame, money, satisfaction, then definitely security is there. And happiness and joy, this is the crux of our life. So don't we want all or some of these for ourselves while thinking about a career? Now, there was a time, some 30 years back, or 25 years back, when we were in our graduation और adolescence से ऊपर निकले थे और हम सब के ऊपर करियर का प्रेशर आ रहा था, we were very very comfortable because there was no pressure at all. The pressure was, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, या फिर मेरा बेटा IAS बनेगा. अब वो बात नहीं रही. अभी तो मेरा बेटा अगर इंजीनियर बनेगा तो क्या बनेगा? Will go for software, or will go for computer science, or go for civil, mechanical, or what is hot these days? Which career one has to choose? Lot of things are there. You think of a career and there are micro careers in it. You think of one doctor and thousands of the doctors are there. Think of one, even not only thousands of the doctors, you one specialized. You go for even आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो उसमें आपको 6 मिलेंगे. एक वो होगा जो आपके दांतों को सीधा करेगा, ऑर्थो डेंटिस्ट होगा. आप जिससे जाएंगे फिलिंग कराने, वो एंडो डेंटिस्ट होगा. जिससे आप गम स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे वो पेरियो डेंटिस्ट होगा. सो देयर आर स्पेशलाइजेशन इन, है ना. कैंसर पे भी जाएंगे तो ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे, तो माइक्रो ऑन्कोलॉजिस्ट. सो दिस इज व्हाट द करियर इज, व्हाट माइक्रो स्पेशलाइजेशन नाउअडेज. And deciding a career is very very difficult because it's a $1 million question. Your entire life, your entire success is based on this only. Deciding the right career, and this career is such a complex process. You all have to undergo through certain kind of evaluation of your personality, evaluation of your aptitude. अगर इनका proper evaluation हो जाता है, there are certain as what sir बहुत अच्छी तरीके से इस चीज के लिए अवेयर होंगे कि CBSE has already started करियर काउंसलिंग एट स्कूल लेवल. 9-10 से ही बच्चों को करियर काउंसलिंग शुरुआत हो गई है, जहां पर वो एक बहुत सारे लाइक वी डू विद MBTI प्रोसेस, वन ऑफ द प्रोसेस जिससे फाइंड आउट हो जाता है कि आपका एक बेसिक एप्टीट्यूड और एटीट्यूड क्या है. अकॉर्डिंग टू दैट सर्टेन करियर्स अपॉर्चुनिटीज या सर्टेन करियर आइडियाज आर गिवन टू स्टूडेंट्स, और फिर आप उस पर चूज करो. विल डिस्कस लिटिल बिट, उस पर भी हम जाएंगे. द वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव. इट वॉज वेरी शॉकिंग. परसों मैंने कुछ अपने फेसबुक में अपडेट्स किए अबाउट वन ऑफ द सेमिनार्स. तो मैंने एक फ्रेंड ने उसमें लिखा कि ये जो चमकते हुए फोटोज, अवार्ड लेते हुए फोटोज जो आप डालते हैं, मुझे मैसेज बॉक्स में भेजा, आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि जो 3 PhD स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएम की नौकरी के लिए अप्लाई किया है. 3 दिन पहले की न्यूज है कि यूपी में किसी डिपार्टमेंट में चपरासी की नौकरी के लिए 3 PhD ने अप्लाई किया हुआ है. आप इस बारे में कुछ नहीं बात करते. मैंने इस बारे में सिर्फ एक बात करूंगा कि उनकी PhD की डिग्री की जांच होनी चाहिए. जो PhD कर रहा है, PhD के बाद में इस थिंकिंग ऑफ द सिक्योरिटी गेटिंग जॉब ऑफ PM, इसका मतलब उसकी डिग्री फेक है. Career is not about getting a secure job in any of the government institution. When you think of getting the pension, career is where you love enjoying your job. So it is very very complex. When I come to engineering, मैं आपको बात बताऊंगा कि engineers कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी कंट्री में और कितनों को जॉब मिल रही है और क्यों नहीं मिल रही है और कितनी रिक्वायरमेंट है.
We are among the least engineers producing countries in world. Among the least producing. और हमको नजर आता है कानपुर में 32 कॉलेजेस हैं जो इंजीनियरिंग करा रहे हैं. 17 लाख इंजीनियर्स बन रहे हैं हमारी कंट्री में हर साल. और जॉब 70% of them are jobless. Why? It's not, there's no demand. The problem is supply is what PhD work. हम वही प्रोड्यूस कर रहे हैं जो PhD जैसे हैं, तभी जो प्रॉब्लम आ रही है. So competitive world, the world is very competitive where you have to prove your mettle, and getting the right opportunity at the right time is again the crux. You should be aware of every career in detail. If you think of